The chapter number is 6. 6. Sounds of vowel O. So kids, आप इस चैप्टर में जो है वॉवल ओ के साउंड्स के बारे में रीड करेंगे. रीड अलाउड. ओबी, बॉब, जॉब, मॉप, रॉब, ओडी, गॉड, रॉड, कॉड, हॉट, ओजी, डॉग, फॉग, लॉग, बॉक, ओपी, हॉप, टॉप, कॉप, मॉप, ओटी, डॉट, कॉट, गॉट, पॉट, ओडब्ल्यू, लो, सॉ, रो, cow. Read and rhyme. This is Bob. Bob saw a pot. The pot is under the cot. The pot has a red dot. The pot is hot. Read and circle the vowel O. So kids, यहाँ पे आपको काफी सारे words given है, उन्हें read करना है and vowel O को circle out करना है. Dog, mog, cod, jog, log, fog, rob, job, top, mod, saw, rod, hog, pot, dog, saw, hop, knot, practice break. Match the following. So kids, यहाँ पे आपको एक साइड पे कुछ सेंटेंसेस गिवन है, उन सेंटेंसेस को रीड करके आपको करेक्ट पिक्चर के साथ मैच करना है. A dog on a cot. एक डॉग जो है वो कॉट के ऊपर है. A hot pot. एक पॉट जो है वो बहुत ही ज्यादा हॉट है. बॉब सॉप. बॉब जो है वो सॉप कर रहा है यानी रो रहा है. अ डॉग ऑन अ लॉग. एक डॉग जो है वो लॉग के ऊपर है. अ रॉड इन अ पॉट. एक रॉड है वो पॉट के अंदर है. अ डॉट ऑन अ कॉट. एक डॉट है वो कॉट के ऊपर है. अ डॉल ऑन अ कॉट. एक डॉल है वो कॉट के ऊपर है. अ कॉक ऑन अ रॉक. एक कॉक है रॉक के ऊपर. कॉम्प्रिहेंशन. Read the sentences aloud. Bob is a dog. He lives in a pot. So kids, एक बॉब है, वो एक डॉग है एंड वो जो है एक पॉट में रहता है. गॉब इज अ फॉक्स. ही लिव्स इन अ बॉक्स. गॉब जो है वो एक फॉक्स है एंड वो बॉक्स के अंदर रहता है.
दे प्ले विद अ टॉप। वो जो हैं दोनों एक टॉप के साथ खेलते हैं। अ कॉक हिट्स देम विद अ रॉड, दे सॉब। एंड किड्स, एक कॉप ने जो है उनको एक रॉड से जो है हिट करा एंड वो रोने लगे। लेट्स आंसर। ए, हु इज बॉब? बॉब कौन है? डॉग। बी, हु इज गॉब? गॉब कौन है? फॉक्स। सी, हु हिट्स देम विद अ रॉड? एंड उन दोनों को रॉड से किसने हिट करा? कॉक ने। Thank you, kids. I hope you enjoy the learning. See you in next class.